Assalamu alaikum, and today's topic is two-dimensional arrays, or we also call it 2D array. Okay, this is our today's topic, और इसके लिए you must have the previous knowledge about arrays or simply 1D array or one-dimensional array. अगर आपने वो मिस कर दिया है तो आप मेरी एक और वीडियो को देख सकते हैं, दैट इज़ अबाउट 1D arrays. तो आपको बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक यू मस्ट हैव अ नॉलेज अबाउट 1D array. ओके, तो थोड़ा सा एक लेट्स हैव अ क्विक उसका मैं एक आपको रिकैप दे देता हूँ 1D array का. In 1D array we used to store the values in one single column, like this is a single column, and we used to store different values. Now it depends upon the size of the array. For example, this array is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and up to 100. Okay, you can assume all the values are between. So this array has the maximum index of 100. That means this array can store 100 values. Okay, and I've already explained that array can store different values. Unlike variables, in variable used to store only a single value. Okay, जो कि मैंने अपने previous lecture में बता दी है. For example, num is a single variable. अगर इसमें आप कोई value store करते हो, for example 5, so it can only store 5 at one time. Okay, if another value comes, so now the previous value will be replaced. Now the final value is the one which is stored in this variable. Okay, lekin sometime in the question, according to the requirement of question, we need the previous values as well. So that's why we use arrays. So one approach was to use different variables. Okay, for example, to store 100 values, I could have used different variables like x. You can store one value in y, you could store the other value in z. Let's say we are storing this value and so on. We have to declare 100 different variables to achieve जो कि अभी हम what we can do with the array. ठीक है, तो इस पूरी हेक्टिक एक एक्सरसाइज से बेटर था कि हम एक एरे बना लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे नेम याद रखने पड़ेंगे, 100 वेरिएबल्स के नेम, और उनके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है, और उसके बाद जब उनको प्रिंट आपने करना है तो अगेन यू हैव टू यूज द नेम्स ऑफ दोज 100 वेरिएबल्स. तो इसके लिए एक तो कोड बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग में इंक्रीज हो जाएगा, और दूसरा ये कि प्रोग्राम को इतना एफिशिएंट नहीं होगा. ठीक है, तो इसका एक सॉल्यूशन था कि हम इसको एक सिंगल नेम दे देते हैं. लाइक इसको मैं कह देता हूं नम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नम. सो नाउ आई कैन गिव इट अ सिंगल नेम नम, और इसके लिए आई कैन यूज दीज इंडिसेस टू डिफरेंशिएट ईच प्लेस फ्रॉम द अदर. तो अगर आपने फर्स्ट प्लेस के ऊपर इसको स्टोर करना है तो देखें एक सिंगल जो प्लेस होगा दैट विल बी जस्ट लाइक अ वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल. ठीक है, तो जो फर्स्ट प्लेस होगी इसको उसने नेम देना है, दैट विल बी num1. कि अगर इसमें आप कोई वैल्यू स्टोर करते हो, फॉर एग्जांपल मैं storing the same values now in arrays, different elements of arrays 30 and num3. now अभी आप देखें कि we are using the same name. ठीक है, I'm not using the different variable, I'm just changing these index values, and in the same way you can store 100 different values, whatever the last value is, we can store 100 different values into this array by using a single name. ठीक है, तो ये एरे एक जस्ट लाइक 100 वेरिएबल्स को समझ लें हमने कंबाइन करके एक एरे बना लिया, बट हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज ओनली अ सिंगल नेम.
ठीक है। तो इसमें वैल्यूज while entering the values in array it becomes easier to use the loop, ठीक है। तो अभी ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये आप मेरा एक प्रीवियस लेक्चर देख लें, उसमें डिटेल से मैंने बता दिया था कि कैसे वैल्यू स्टोर करनी है, कैसे वैल्यूज को आउटपुट करना है, ठीक है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द टू डायमेंशनल एरेज। अच्छा, इन टू डायमेंशनल एरेज नाउ वी डोंट यूज अ सिंगल कॉलम जस्ट लाइक 1D एरे, ठीक है। तो अभी हम यूज करेंगे मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन अ फॉर्म ऑफ टेबल, this is one column, this is second, third, fourth, fifth, sixth, whatever it is the requirement of the questions, okay, how many columns you need. And in the same way I'm also making the rows as well. Now the data will be stored in a tabular form, ठीक है। तो अभी आप देखो कि रोज कितनी बन गई हैं, वन, लेट मी राइट इट हियर, 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। और कॉलम भी हमारे पास कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए हम इसमें एक इंक्रीज कर लेते हैं जस्ट टू कीप द डिफरेंस बिटवीन, कि अगर एक वैल्यू हम यूज करेंगे तो दैट जो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। तो देर आर 7 कॉलम्स नाउ एंड 6 रोज, ठीक है। तो अभी मल्टीपल वैल्यूज हम टेबुलर फॉर्म में कैसे स्टोर करेंगे, तो फर्स्ट जब हम इसमें स्टोर करेंगे वैल्यू तो हमें वी विल बी नीडिंग टू लूप्स नाउ, ठीक है। इन 1D एरे हमें सिर्फ एक लूप चाहिए थी जो कि ऐसे चलती थी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, और वैल्यूज यहाँ पे हम स्टोर करते जाते थे इन ऑल दीज पोजीशंस। बट नाउ फॉर स्टोरिंग द वैल्यूज इन अ 2D एरे वी यूज टू लूप्स। कैसे दो लूप की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट लूप विल रन, विल काउंट द रोज, ठीक है। फर्स्ट लूप कहेगी 1, जैसे ही फर्स्ट लूप चलेगी 1 टाइम तो द इनर लूप शुड रन फॉर 7 टाइम्स, बिकॉज फर्स्ट रो में वी हैव 7 डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके। देन जब ये सेकंड रो के ऊपर आएगी, ठीक है, एक लूप जब सेकंड लूप के वो सेकंड रो के ऊपर आएगी तो अगेन द इनर लूप विल रन 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो वन लूप विल रन for the rows, and so inside that loop we will use another loop, okay, that will run each time for the column whenever the outer loop runs to the next row, so the inner loop will run for 7 times, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट पे आएगी इनर लूप 7 टाइम्स, जैसे ही सेकंड पे आएगी इनर लूप जो है फिर 7 टाइम्स, जैसे। तो अभी हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होगा हाउ टू डिक्लेयर दिस 2D array, ठीक है। फॉर 2D array we normally use the word declare, let me write it here. So in pseudocode we mostly use the capital letters, especially for those command words. Declare, then now you will write the name of array. Let's say again I am giving it a name num, okay, and then you will tell that it is an array, okay. And now the first part will show the number of rows. Let's say the number of rows are 1 to 6, so we will write it 1 to 6, and the other part will show the number of columns 1 to 7, and then we will also write what type of data this array can store, the whole array can store. So you can write of integer type, okay. This is the type of data, this is the size of array, okay, how many, this is for the rows and this is for the columns, and
Num is the name of array. Declare means to create. Okay, and in programming, for example, in VB we write dim instead of declare. Okay, so in pseudocode we use this word. Now to store the values in the 2D array, as I told you, we have to use two loops. So the first loop will run for the rows. So I'm giving it the counter for the row name. How many rows? ठीक है. Since the other loop is inside this loop, तो उसको हम थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे. इसको कहते हैं indentation. That means the next part is inside the previous statement. ये इसके अंदर है. For column 1 to how many columns? 1 to 7. Okay. इसमें हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे अगेन विद द इंडेंटेशन सो दैट कि ये शो करता है कि नाउ नेक्स्ट लाइन इज इनसाइड दिस लूप. ओके, तो हम इसमें अगर इनपुट लेते हैं कोई वैल्यूज तो वी कैन आस्क द यूजर टू एंटर अ नंबर and then input. Now use the name and the dimensions. Next column. Now this next is for the inner loop. This is the nested loop as well, and this next is for the outer loop. अभी कैसे how this will run? So for row 1 to 6, first time the row will be 1. Okay, the value of row will be 1. That means so the program is starting from this place, row 1. Okay, right. So it will come inside. Now this whole loop, since it's a nested loop inside this statement, inside this loop, so this will run for 7 times now. Okay, so row is 1. Now the column will change 7 times. Okay, so the first time it will ask the user, okay, enter the number. Now as soon as the user enters the number, it will be stored in this array here. Okay, where? So first time row was 1 and the column was 1. That means this place. So whatever the user enters number, first row and first column. Okay. Now since this is the nested loop, this will run 7 times. क्योंकि ये इसके अंदर है, ये पूरे 7 मरतबा 7 टाइम्स ये रन करेगी अभी. ठीक है, तो ये अभी कॉलम 2 हो जाएगा क्योंकि ये कहता है नेक्स्ट कॉलम आफ्टर फर्स्ट. तो कॉलम विल बिकम 2. तो फिर कहेगा यूजर को एंटर नंबर. नाउ द कॉलम विल चेंज. रो इज स्टिल 1. ठीक है, ओके, क्योंकि मैंने कहा था अंदर वाली लूप ने 7 टाइम्स चलना है. तो ये रो इज 1 एंड कॉलम इज 2. दैट मींस ये रो 1 होगी, कॉलम 2 है, तो नेक्स्ट वैल्यू विल गो हियर. ठीक है, फिर इसी तरह देखो जब ये कहता है नेक्स्ट कॉलम, नाउ कॉलम विल बिकम 3. सो नाउ first row and third column. That means you are supposed to enter the value here, first row and third column. Okay, and in the same way this will go for 7 time. अगर ये 7th के ऊपर जाता है, let's assume, just to quickly finish it, तो the last time जाएगा for the last column, it will be the row is still 1. ठीक है, और कॉलम 7 के ऊपर. सो आफ्टर एंटरिंग ऑल द वैल्यूज हियर, द लास्ट वैल्यू वट एवर द वैल्यू वाज, वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी. अभी नाउ व्हेन द कॉलम इज 7, नाउ द इनर लूप इज कंप्लीट. ओके, व्हेन द इनर लूप इज कंप्लीट, दिस लूप विल बी टर्मिनेटेड. नाउ इट विल गो टू दिस स्टेटमेंट नाउ. ठीक है, अभी कहते हैं नेक्स्ट रो. नाउ इट विल गो टू द नेक्स्ट रो. दैट मीन्स नाउ इट विल reach the next row, and in the same way the inner loop will run for 7 times. Okay, so it will keep entering data here on this position. ठीक है, जब ये 7 टाइम कंप्लीट होगा फिर ये कहेगा नेक्स्ट रो. नेक्स्ट रो मींस नाउ द रो विल बी 3. ओके, ये 3 टाइम, और फिर ये इनर लूप जो है अगेन इट विल स्टार्ट एंटरिंग द डेटा.
यहाँ पे होता जाएगा और at the end when the row was 6, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेगा, again it will run for the 7 times and all the values will be entered here. In this way you can enter the value in 2D array using two loops. Okay, so this was how you can store the values in a 2D array.